Let's do it. First question. Okay. A ball of mass 1 kg is released from position A inside a wedge and a hemispherical cut of radius 0.5. Hemispherical? ये लग तो नहीं रहा है, चलो ठीक है. 1 kg का बॉल है, रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए. ये पोजीशन ए है. Okay, 0.5 meter, fine. The force exerted by vertical ball MO on wedge. So ये ball, okay. When the ball is in position B, this position में, और फिर smooth. Oh, okay, so like, समझा. क्या इसकी जो मोशन है उसका मुझे एक्सेलरेशन देखना है, राइट? उसका फोर्स एनालिसिस करना है. सो ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर है, इसमें ग्रेविटी लग रही है, और कोई फोर्स है नहीं, राइट? एंड देन इसका जो एक्सेलरेशन है दिस दैट इज गोना बी लाइक, हाँ. एंड बाय द वे, ये जो वॉल है, राइट, ओके, इससे हमेशा ये जुड़ा हुआ रहने वाला है. मतलब जब तक ये यहाँ तक नहीं आता तब तक तो जुड़ा हुआ रहेगा, बिकॉज इसमें नॉर्मल फोर्स ऐसा लग रहा है, राइट? या तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा. सो इसका मतलब है कि ये इसमें ऐसे जाने वाला है, राइट? क्या कर सकते हैं भाई? एनर्जी कंजर्वेशन, आई गेस सो. वी कैन फिगर आउट द वेलोसिटी इन दैट वे, राइट? क्या एंगल है ये? इट्स एंगल 60 डिग्री. सो मतलब कि 1/2 ऑफ दिस होल लेंथ. सो r/2 is how much it went down, right? So mg r/2 is equal to half mv square. मतलब v is square root of gr. तो अपने को वेलोसिटी तो पता है, और यू कैन से v square upon r is equal to g. That is of course this acceleration. और इसमें tangential acceleration b है, right? Yeah, right. But we actually only care about the normal acceleration. Do we? Yeah, I guess so. Okay. So normal acceleration कैसे हो रही है? पहले तो यहाँ पे normal force ऐसा है, then you got gravity, right? So यहाँ पे g है, and then this angle is supposed to be 60 degrees. So फिर g cosine theta यानी कि g upon 2 in this direction, like mg/2. यहाँ पे force लगेगा, यहाँ पे normal force है, बस उतनी ही force है, और कुछ तो है नहीं इस पे. और जो total cerebral acceleration is equal to mg. So that means n minus mg/2 is equal to mg, it seems. So normal force must be 3/2 mg. अब अगर मैं कंपोनेंट की बात करूँ, नॉर्मल फोर्स का एक्स कंपोनेंट. सो वी नो दैट दिस एंगल हैज टू बी 30 डिग्री, राइट? क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री था. सो yes, it's 30 degrees. So फिर cosine of 30 degrees like square root 3/2. So square root 3/2 times normal, that's going to be 3 square root 3/4 mg. That's the x component जो कि इसको लगाना पड़ेगा. इसमें और कोई x component तो है नहीं. And that's not here. हाँ, क्या गलत हो गया इसमें? That's mg. Wait, did I mess up somewhere? कितना नीचे गया ये? Of course r/2, right? So mg is equal to half mv square. So v square upon r is equal to g. That's for sure. So like x, the centripetal force is of course, yeah, just that thing, because cosine is 1/2. That's right. So ठीक है ना, मतलब ये g है ही, तो that must be the case. तो यहाँ पे g/2 आ जाएगा, and then in the end just 3g/2. नहीं यार, ऐसे होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है. It must be 3 square root 3/4 times mg. Okay, इसमें m, right? Okay, इसमें mg, oh yeah, that's why. m कितना है? Mass 1 kg, and then g is 10, right? That's the thing, right? So यहाँ पे 10 put कर देंगे. So it's gonna be like 3 square root 3/2 times 5, यानी कि 15 square root 3/2. That makes it option C. Next question. Second question. Second is the VT graph of an object of mass 1 kg is shown. Okay, this is time, this thing is velocity, mass 1 kg, select the wrong statement. So पहले क्या velocity increase हुई till this. Okay, work done on the object in 30 seconds. कौन सा? In 30 seconds, right? हाँ, इसका just change in kinetic energy, which is 0 of course. So the net work done is 0, right? So A is correct. We want the wrong statement, और ऊपर क्या था? Correct statement, right? ये क्या हो रहा है यार? ये lag. Okay, just wait a second. Yeah, ऊपर अपने को correct statement चाहिए था, यहाँ पे अपने को incorrect statement चाहिए. Work done by, wait. Work done of the object is 0. Yes, average acceleration of the object is 0. That's also correct because velocity 0 हो गई. Average velocity of the object is 0. That's wrong because इसमें continuously same direction में velocity थी, तो फिर इसमें displacement तो हुई है. That's the wrong statement, and there is force on the other object. ठीक है, तो C is the answer. Third is
An observer holds one end of a uniform chain of mass m such that the lower end of the chain just touches the horizontal floor. The observer releases the chain from its position just before the last link of the chain strikes on the floor. Right. The force applied by the chain on the floor is so last. Right. The force applied by the chain on the floor. Of course. तो पूरा का पूरा मास ऑलमोस्ट इस पे आ चुका है एक्सेप्ट जो बचा हुआ है राइट दैट्स कमिंग डाउन वेलोसिटी व्हाटएवर कितनी है वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh राइट बिकॉज वो फ्री फॉल में है तो अपन ने 1000 बार किया हुआ है राइट या वी नो इट्स सपोज्ड टू बी 3 mg राइट या क्योंकि वो फ्री फॉल में लाइक ओके स्क्वायर रूट ऑफ 2gh दैट्स दैट वेलोसिटी राइट स्क्वायर रूट ऑफ 2gh sure we just want this velocity अच्छा mass times that so इसका जो mass रहने वाला है dm right dm will be like you know lambda dx and that yeah this is the momentum change right in the y of course and this thing upon dt so it's gonna be like lambda times dx upon dt which is once again just the velocity of this thing so like square root of 2gh plus the square जाएगा ना so times 2gh I guess that makes sense because right and the is it correct or not यहाँ पे lambda आ गया था and then fine और जो पूरी की पूरी लेंथ थी that was of h length right so ये चीज upon ये चीज है m upon h ये कैंसिल हो जाएगा so just 2 mg is that force और जो normal force मतलब बाकी चेन पर होता है mg है so 3 mg थर्ड का आंसर b next question Fourth is two blocks of mass 3 kg, 6 kg are connected to the ends of a spring constant K. The whole system is kept at rest on a smooth horizontal floor. Suddenly 3 kg block is given a velocity 10 meter away from 6 kg block. Maximum elongation in the spring that will be whenever उनकी relative velocity 0 हो जाती है अपन 1000 बार एक केस कर चुके हैं right first so क्या energy conservation और कुछ नहीं है इसमें right or you know you can always go for क्या बोलते हैं इसको एनर्जी कंजर्वेशन ना और क्या दैट्स व्हाट वी शुड डू let's just do that thing in that case okay so अपने चाहिए मैक्सिमम elongation in the spring okay still उस टाइम पे भी इनकी relative velocity 0 हो जाती है so कितना क्या दिया अपन ने इसको 10 मीटर पर सेकेंड राइट सो ये कितना 3 प्लस यानी कि 9 और ये 3 kg को अपन ने दिया 30/9 which is 10/3 meter per second is that velocity right okay cool this is weird isn't it so 10/3 is that velocity I guess is this correct or not look so हमारे पास में 30 का momentum था upon 9 that's going to be 10/3 that's the velocity इसका स्क्वायर करना अपने को and then half m so half times 9 of this thing so it's going to be 100 का upon like okay 50 times 1 right that's the kinetic energy right तो कुछ चेंज इन kinetic energy निकालना है इनिशियली kinetic energy क्या थी इनिशियली ये 3 kg का ब्लॉक मूव करता विद दिस थिंग सो लाइक 100 अपॉन दिस लाइक 50 टाइम्स 3 आई गेस राइट या 50 टाइम्स 3 सो इट वाज 150 और अब ये सिर्फ 50 हो गया है सो 100 का इसमें चेंज हुआ और वो 100 जो है दैट इज बेसिकली हाफ kx स्क्वायर so yeah like 200 is equal to kx square you can say and then what is k in fact it's just 50 which means ki right 4 is equal to x square x is equal to 2 so 2 meters is the elongation मतलब कि फोर्थ का आंसर b होगा away right yeah not perpendicular to the length next question fifth the potential energy of a 1 kg particle free to move along the axis is given by this thing okay potential energy the air mechanical energy of the particle is to wait okay it's free to move along the axis in a second well mechanical energy of the particle is 2 joules acha then the maximum and speed is oh okay this is doable you know so like 2 is just so 2 minus of this guy and 2 plus x square upon 2 minus x power 4 upon 4 that's the thing right that's the kinetic energy so इसके maximum कब रहता है yeah it's in x square and whatnot free to move along the x axis right नहीं इसको ही मैक्सिमाइज करना और कुछ है नहीं इसमें राइट या
इसका मैक्सिमम कब रहेगा? whenever x square is equal to, so negative v upon 2 है, यानी कि 1 upon 2 upon 2 times is like 1 upon 2, यानी कि x equal to 1 of course. So at that point it's got 2 plus 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 4, यानी कि 2 plus 1 upon 4, right? No? Maximum speed, okay, so 2 plus 1 upon 4. Wait, is that correct or not, first of all? Wait, something's not looking correct. This is like minus of, so एक काम करो ना, x square upon 2 को u बोल दो, so it's like just minus u square plus u, and this of course has the maximum value whenever u is equal to 1 upon 2, right? So at that point ये क्या हो जाएगा? negative 1 upon 4 plus 1 upon 2, which must be 1 upon 4, so 2 plus 1 upon 4, that's of course 2.25, that's the energy. So half mv squared, mass कितना है 1, so half v squared is equal to 2 plus 1 upon 4, I guess. So you can say v square is just equal to 4 plus 1 upon 2, which is like 4.5. उसका स्क्वायर रूट चाहिए अपने को. Oh, अपने को इस इन टर्म्स में चाहिए, right? Okay, so like 4.5 is just 9 upon 2. उसका स्क्वायर रूट अपने को निकालना है, which is like 3 upon 2. So C is the answer. Next, sixth question. Sixth is a circular disc of radius r is removed from a bigger circular disc of radius 2r such that the circumference of the disc touch. अच्छा, so ये ऐसा था, अपने इसमें से ऐसा निकाला, right? Okay, the center of mass of the new disc is alpha r from the center of the bigger disc. The value of alpha is, चलो इसका center of mass है of the new disc, that is alpha r from the center. हाँ ठीक है ना. So it's like तुमने ऐड कर दिया कुछ भी. हाँ समझ गया. So इसका पूरा मास, let's just say it's m, तो इसका पूरा मास क्या होगा? 4m, राइट? तो ऐसे तुम सोच सकते हो कि तुमने नेगेटिव मास में ऐड किया है, सो लाइक नेगेटिव m टाइम्स इसका सेंटर ऑफ मास, विच इज एट x इज इक्वल टू r, राइट? तो ये पूरा 2r था, इट्स गोना बी r ओवर हियर, ओके, अपॉन, तो ये ओरिजिन है अपनी, बाय द वे, दिस थिंग अपॉन टोटल मास, विच इज, अब टोटल मास कितना है? टोटल मास रहने वाला है 2, सो 4m माइनस m, विच इज 3m, सो नेगेटिव r थर्ड, राइट? सो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, ओके, center of the bigger disk is going to be r third, of course. Okay, so alpha is just 1/3. This is the answer A. Next question, seventh. Seventh is a block of 2 kg is free to move along the axis. It is initially at rest. कौन सा 2 kg का block? ये पता नहीं. Okay, from t equal to 0 onward, it is subjected to time dependent force Ft. Okay, kinetic energy of the block after 4.5 seconds is, so force ऐसा है, right? Of course. So फ्रिक्शन वगैरह कुछ बताया इसमें? नहीं. फ्री टू मूव अलोंग द एक्सिस इज फाइन. द ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकंड्स, राइट? तो ये तो इजी है ना. इसका एरिया क्या रहेगा? वर्क डन, जस्ट फिगर दैट आउट. ये कितना है? 4 न्यूटन और ये 3 सेकंड, सो इट्स गोना बी लाइक 6 न्यूटन सेकंड्स, सो 6 जूल्स. ओह, ये टाइम है. दैट्स नॉट राइट. अच्छा, अपन मोमेंटम निकालो ना डायरेक्टली, मोमेंटम चेंज. सो कितना हो जाएगा ये? 4 टाइम्स ऑफ 3/2 विच इज 6, सो ये 6 मीटर पर, या लाइक, ओके, 6 है यहाँ पे मोमेंटम, और ये चीज़ क्या हो जाएगी? सो दिस इज 1.5 एंड दिस थिंग इज स्लोप सेम रहने वाला है, एवरीथिंग. दिस इज सम कॉम्प्लिकेटेड थिंग. पहला एरिया क्या है? जो 6 प्लस दूसरे एरिया के लिए वी गॉट हाफ, देन 1.5 बिकॉज should be negative actually, so negative 1/2, then you got this 1/1.5, and then ये चीज, so that's just this thing times the slope. तो slope की मतलब negative slope, so ये कितना है? 4 versus 3, तो ये भी 4/3 रहेगा, right? So 4/3 times this guy is like a square times 4/3. That's gonna be the thing, of course. Yes, that makes sense, huh? Yep, it makes sense. Sure. तो फिर ये मोमेंटम है. So it's gonna be like what? 3/2 का स्क्वायर, so 1/2 टाइम्स 2/3, 2/3 and then 3/4, 9/4, 6 minus 1.5, 4.5 is the answer. अच्छा, and then mass of block. Okay,
ब्लॉक का मास है 2 kg, so this thing upon 2 is supposed to. अब तो क्या चीज़ से kinetic energy, right? This is the momentum that it got. So momentum times, so momentum को square करता हूँ basically, like 4.5 square 9/2 का square डिवाइड करो मास से अपॉन 2 एंड देन इसका हाफ ले लो, दैट्स द एनर्जी. So it's 81 upon, हाँ ठीक है मतलब कर देंगे 81 upon 4 times 2 is 8 times 2 is 16, so 81 upon 16, right? Which is how much? I would say it's approximately 5. So C is the answer. Is it really like 5.46? So 506 times क्या 16? हाँ, not exactly actually. Well, whatever. Next question. या मतलब ये तो अजीब है. Almost 81 है but नहीं. Okay, next question. 8. A small block of mass m is okay. A small block of mass m lying at rest at a point P of the wedge having smooth semicircular track of radius r. Wedge arc. Okay, the medium value of the horizontal acceleration A naught of the wedge so that the mass can just reach the point Q. तो मास को क्या एक मिनट क्या lying at the rest, ये रेस्ट पे है. ओके ये ऊपर जाएगा. फाइन फाइन. ओके कैन जस्ट रीच द पॉइंट. तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन की क्या है? आई गेस इट्स कांस्टेंट व्हाटएवर. Mass can just reach the point Q, right? Okay, so it's got this acceleration force right there, of course. So almost I would say it's like energy conservation, right? Almost energy conservation. Yeah, that's what. So for the critical condition क्या हो रहा है? तुम्हारा जो a plus g vector है, that's actually that's like this thing actually. So I would say minus a plus g, well whatever. So यहाँ पे a vector the a naught की वैल्यू है, यहाँ पे g रहने वाला. A naught equal to g, of course. That's the thing. Pretty obvious, isn't it? So minimum value should be g, of course, because yeah I can say that for sure. But you know what? जो भी a vector plus g vector जहाँ पे भी जा रहा होगा, राइट? तो ये ऐसा है और ये ऐसा है, राइट? अगर तुम इसको थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, राइट? सो विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक इट्स लाइक दिस. अगर तुम थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, सो यू विल सी दैट इट्स लाइक दिस एक्चुअली, कि ये जो ट्रैक है, राइट? ओके, ये है अपना ए वेक्टर प्लस जी वेक्टर वाला केस. एक्चुअली नेगेटिव ए वेक्टर बट डजंट मैटर इन द एंड. ओके एंड देन इट्स मेकिंग सम एंगल थीटा नॉट विद इट, और ये सेम एंगल थीटा नॉट फाइनली बनाएगा जब ये यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज समथिंग लाइक अ पेंडुलम, नॉट सिंपल पेंडुलम बट पेंडुलम, राइट? सो एनर्जी कंजर्वेशन, although यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट यू गेट द थिंग, वो काइनेमेटिक्स वगैरह वैसे ही काम करेंगे. सो इन दिस फ्रेम एनर्जी कंजर्वेशन यू विल गेट दिस थिंग. और वी जस्ट वांटेड टू रीच Q, तो ये थीटा नॉट मस्ट बी 45 degrees of course. For that to happen, A equal to G. So G is the minimum value. 8 का आंसर C. Next, 9th. 9th is okay. कहाँ पे चला गया 9th? Uniform body of mass m and radius r has a small mass m attached to the edge as shown. System is placed on a perfectly rough horizontal surface such that the mass m is at the horizontal level. Okay, assume that there is no slipping at point A. If IA is the moment of inertia, ये center of mass का वैसे inertia में कैसे आ गया फिर? ठीक है, IA is the moment of inertia of the combined system about the point of contact A. Then the normal reaction at point A just after the system is released from rest is what? Normal reaction at point A. Okay. There's also friction and everything, Weird. Just after the system is released from rest. हाँ राइट, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा, राइट? ओके अच्छा, अपने को वैल्यूज भी दी है इनफैक्ट. इफ आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द, हाँ ठीक है, स्लिप नहीं हो रहा है व्हाटएवर, अपन इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट? या the normal reaction at point A, or A is the only vertical, and of course gravity is there, but other than that there's only the A thing that's vertical force.
हाँ ठीक है, करते हैं ना फिर इससे एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लो पहले तो। सो या फिर अल्फा आर निकाल लो, वट एवर। अल्फा इज जस्ट इक्वल टू द टॉर्क ऑन दिस होल गाय, right, which is because of this thing only. So like mg times r, right, that's the torque. But वो तो about center of mass है, we want about this point, right? Yeah, so ये ऐसा है, हाँ ठीक है, वो still mgr ही रहेगा because it's per cross product, right? Okay, so planar है, so you can always use torque upon the inertia, so ia, that's what angular acceleration is. So this times of r, alpha r is equal to mg r squared upon ia times, हाँ ठीक है, तुम्हें समझ ही गया होगा। सो इसका मतलब है कि अपने को इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल चुका है अपने को स्मॉल एम का विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, राइट? एंड ऑफ कोर्स इट्स लाइक इन दिस डायरेक्शन, यू नो। ओके, सो इसका एक्सेलरेशन कैसा है एक्चुअल में, ऐसा एंड ऐसा भी। इसका इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, सो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी 0 है, सो लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स का को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट्स जस्ट दिस एक्सेलरेशन। तो ये जो पूरा है, इनफैक्ट इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हो नहीं रहा है, बट इसका हो रहा है, राइट? या ओके, सो कितने से चेंज हो रहा है, इसका रेट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ कोर्स दिस गोना बी mr squared upon ia, and this times this mass once again, so m square r squared upon ia, uh, right, that's the force on this, मतलब resultant force जो भी है, right, on this whole system actually, you know, क्योंकि इसका center of mass change हुआ नहीं in the y direction, that is, and this is actually changing, understandable, and actually this is like starting to move in that direction, और ये भी इसका एक्सेलरेशन कंप्लीटली इस डायरेक्शन में, राइट? तो इसको ऐसे कौन भेज रहा है, फ्रिक्शन ऑफ कोर्स, यू नो, दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स सिर्फ वर्टिकल में काम कर रहा है। वर्टिकल में कौन से फोर्सेस है, नॉर्मल फोर्स है ऊपर, ओ बाय द वे नीचे नीचे है ना, या सो अपन सिर्फ नीचे के फोर्सेस देखते हैं पहले तो। सो कैपिटल एम प्लस एम टाइम्स जी माइनस, राइट, और ये क्या है, दिस इज लाइक डी पी अपॉन डी टी फॉर दिस होल सिस्टम बेसिकली, इजंट दैट राइट? या, and this thing minus, you know, मैं क्या कर रहा था, minus normal force, that's equal to m squared r squared upon ia, right? So n is just equal to m plus m times g minus m squared r squared upon ia. Let's do it. So what's m plus m? It's 8. 8 times of 10 minus, what's this thing, m square, वेट, क्या इसमें ग्रेविटी नहीं रहेगी? ऑफ कोर्स रहेगी ना, यहाँ पे जी का क्या, मैंने फैक्टर हटा के दिया, यहाँ पे should be over here as well. Okay, m square r squared, so 4 times r कितना है, 1, इसका छोड़ दो, times g which is 10 upon ia is 4 once again, तो ये गया, it's 70 basically, so 9th का आंसर D। ये लंबा था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is moving on a circular orbit around a planet. A sharp impulse is given to satellite such that it escapes from gravitational field of the planet. The impulse can be given in two different ways as shown. मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, फिगर तुमने बनाई नहीं यार। The ratio of the impulse given in two cases, oh god, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे, तुम्हें कैसे बताऊँ तुम्हें कुछ? हाँ, whatever. Next, two balls A and B, तो 11th कर रहे ना अपन, 10th का पता नहीं क्या है, 11th. Two balls A and B having masses 1 and 2, moving with speeds 2 and 4 respectively, 21 and 4, okay, in opposite directions, okay, colliding head on. After collision, A moves with speed 1 in the same direction. Then the incorrect statement is, ठीक है ना, so A का क्या हो गया, A is of what, 1 kg, right? उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, स्पीड्स, इसको एक टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं ना, यू नो। सो ये ए है, ये बी है, मासेस, इनिशियल स्पीड्स, फाइनल स्पीड्स, राइट? सो ए का मास कितना दिया है, 1, बी का मास 2, ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, सो 21 इन द एक्सेलरेशन आई गेस, ओ इन अपोजिट डायरेक्शंस, राइट? इसको मैं नेगेटिव 21 दे रहा हूँ, नेगेटिव 21 नहीं, इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको अपन नेगेटिव ले लेंगे। So now it's -4 or something, I don't know, and this is 2, right?
After collision, A moves with speed of 1 in the same direction. So इसकी final velocity 1 रह जाएगी. Right? Okay, then the incorrect statement is, so it's the momentum change कितना हुआ? So it's gonna be like negative 20. Okay, negative 20. Yeah, same momentum is here. So 20. So you know 10 का change हुआ होगा, मतलब ये 6 हो गया होगा. Right? Okay. The velocity of B after collision is 6 meter per second. Opposite direction before collision. Yes. So A is correct. अपने को करना क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो देन ए इज नॉट. क्वेश्चन रेस्टिट्यूशन. सो इनिशियली क्या था? इनिशियली 25 वाज द थिंग. अब क्या है? अब 5 है, सो इट्स 1/5 is 0.2, राइट? Loss in kinetic energy due to collision is 200 joules. Loss in kinetic energy, oh god, so half mv squared, like half of this guy. So first of all, this 1/2, इसका square like 1 minus 21 का square is just 441. okay. फिर इसके लिए क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 2, तो 2 तो गया, एंड देन just इसका स्क्वायर माइनस दैट स्क्वायर, राइट? वी जस्ट फाइंड चेंज इन एनर्जी बेसिकली. लॉस पर बाद में देख लीजिए. 36 माइनस 16, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव 44 या नेगेटिव 440. सो इट्स गोना बी नेगेटिव 220, एंड देन प्लस 20 I guess, which is negative 200. That's the change in kinetic energy. So loss कितना है? 200 joules. That's right. So C is actually correct. Impulse of the force between the two balls is 40 Newton seconds. No, it's 20. अपन ने अभी तो किया. So D is wrong. Right? 11 का D. Next. So what 12th? Flat car of mass m0 starts moving on a smooth horizontal plane due to constant horizontal force. क्या? ठीक है, ये एक कार है, starts moving on a smooth horizontal plane due to constant horizontal force. Sand spills on the flat car from a stationary hopper and sticks to the car. The rate of loading is constant and is equal to mu kg per second. The time dependence of the velocity of the car. Momentum same रहना है, उतना ही है इसमें, क्योंकि इसका कोई momentum था नहीं इस डायरेक्शन में. So yeah. Oh, and it's a constant horizontal force, which momentum same नहीं रह रहा है. Fine. Right. So अपने को चाहिए time dependence of the velocity of car. So of course momentum at any given time t can be given as f times t, right? Because f is a constant. Okay, time dependence of velocity of car, and then this thing upon जो भी अब इसका नया मास है, which was, so मास इनिशियल इसका m0 था, अब इसमें mu times t सैंड गिर चुका है, right? Rate of loading is mu kg. हाँ ठीक है ना, समझ गया. So that's right. That's the, this thing is the momentum, right? No, okay, ये momentum था. This is the velocity actually. That's gonna do the thing, right? It's dv upon dt. Sure. So ft upon m0. Yeah, A is the answer. To 13th now. Okay. Two objects with masses m1 and m2 are moving along the x-axis in the positive direction with velocities v1, v2. Okay, respectively, where v1 is, okay, fine. दोनों along x direction. Okay. Speed of the center of mass of a system of two bodies is. So v1 is less than v2 बोल रहे हो? m1 m2 क्या है? तो तुमने कुछ मुझे बताया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं. ओके, ठीक है ना, जो भी है. स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट? सो ऑफ कोर्स v1 से बड़ा होगा एंड v2 से छोटा होगा, नहीं है. सो इसको क्या हो गया? ग्रेटर देन v1 एंड लेस देन v2, सो इट्स गोना बी d ऑफ कोर्स, राइट? ओके, नेक्स्ट 14th. 14 is a 50 kg boy runs at speed of, इसको क्या हो रहा है? ये चल भी नहीं रहा है. wait, I think surface सही नहीं है इसके लिए. Come on यार, मेरा माउस खराब हो गया. 14th. 50 kg boy runs at a speed of 10 meter per second, jumps onto a cart as shown. The car is initially at rest. If the speed of the cart with the boy on it is 2.5, what is the mass of the car? Friction वगैरह neglect करना है, of course. और क्या है? Okay. If the speed of the car initially rest पर है, ये ऊपर चढ़ गया. Okay. हाँ, क्या घटिया क्वेश्चन है. कितना मास है इसका? 50. 500 मोमेंटम है इसका, दैट्स इक्वल टू, अभी क्या है इसका? सो 50 टाइम्स 2.5, जो भी है 50 प्लस मास,
जो कितना रहने वाला है, times 2.5, right? So 50 plus mass is equal to kg is like 5,000 upon 25, which is like 200. So mass is of course just 150 kg. That's going to be option A. Next question. Friction अपन assume क्या 0 है. Next you got 15th. 15th is a body of mass m accelerates uniformly from rest to speed v naught in time t naught. Okay, to a speed v naught in time t naught. The work done on the body till any time t is what? Accelerates uniformly from to a speed v naught in time t naught. ठीक है. The work done on the body till any time t is क्या? Seriously. So क्या उसकी speed रहने वाली है? It's gonna be just v naught. So sorry, t times of the acceleration, which is rest is start हुई ना? Yeah, like v naught upon t naught times t, right? That's the speed. So like work done is just the change in kinetic energy is like half m times इसका square, which is which option? Right, half mv naught square, and then you got t square upon t naught square. Cool. That's gonna be option A, of course. Right. A. Next question, 16. A man who is running has half the kinetic energy of the boy of half his mass. Okay. अच्छा, the man, so इसकी ठीक है करते हैं ना, man, boy, masses, initial velocities, final velocity. ठीक है. Man who is running has, so masses अपने को पता नहीं है, इसका कैपिटल एम बोल दो, इसका स्मॉल एम बोल दो. अच्छा, इसका हाफ मास है, ठीक है, इसको 2m बोल देते. इसकी वेलोसिटीज कैसी है? सो who's running has half the kinetic energy of the boy of, so suppose boy की velocity v नहीं, man की velocity v ले लेते हैं, half the kinetic energy, right? Okay, इसकी suppose अपन ने v ले ली, then mv square का आधा, right? That's equal to इसका m times इसका v square, so y dash square बोल देते हैं, right? Sure. तो इसका मतलब क्या हुआ? That v dash is equal to v upon square root 2. Wait, what? Oh, यहाँ पे 1 upon 2 is so v upon 2. That's gonna be the thing. So this is this thing is gonna be 2 something like that. Okay. Right. The man increases his speed by 1 meter per second. So this is now v plus 1. Then he has the same kinetic energy as the boy. Acha. Now it's still 2v, huh? Right. The original speed of the man was, क्या क्वेश्चन था सच में. So अब क्या है? 2 times of v plus 1 का square, that, and still एक बार चेक कर लेते हैं. Okay, ये 2 है and ये 4 है. Of course half of that. Yeah, we don't want that right now. Okay. So अब energy equal is like क्या v plus 1 का square equal to इसका boy का energy is like okay 2v का square, I guess. Right? So v square plus 2v plus 1, that's equal to 2v square, right? So v square minus 2v minus 1 is equal to 0. That's the thing. तो v क्या है बेसिकली ये बोल रहे हैं. So minus b is like 2 plus 1. फिर ऐसा करो ना, v minus 1 का square is equal to 2. So v is equal to square root 2 plus 1, या फिर हाँ right, square root 2 plus 1, which is option D. Next question, 17th. is a rope of length L and mass m is connected to a chain of length L and mass 2m. Chain of length L and mass 2m. अच्छा, ये पहले rope है, फिर बाद में एक chain है. And hung vertically as shown. What is the change in gravitational potential energy system is inverted and hung from the same spot? Huh? Okay. Hung from the same spot. ठीक है ना, no big deal. So इसका हर पार्टिकल ऊपर गया हाइट h से, h कितना है बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज गाइस, राइट? यानी कि इसकी लेंथ, मतलब हाँ, ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, ये लेंथ भी l होगी ऑफ कोर्स, राइट? सो वो जो 2m वाला है उसके लिए क्या हो गया तुम्हारे लिए, इंक्रीज कितना हुआ? 2m g एंड डेल्टा h विच इज प्लस l, और जो ये वाला बंदा है m, उसके लिए क्या हो गया? m g नेगेटिव l, राइट? That is gravitational potential energy, right? So ये हो जाएगा इस mgl, right? Of course. So it's gonna be A. Next question.
या और क्या हो सकता है? ओके 18th, the work done by force F is equal to x square iota. Okay, ठीक है, around the path shown in the figure is, okay, x square I plus, oh come on seriously, so it's proportional to the radius square basically, right? Okay, क्या हो रहा है, पहले जीरो से ए पे जा रहा है, जी पूरा करना पड़ेगा क्या? दिस इज जस्ट, ठीक है करते हैं। सो पहले क्या हो रहा है, जस्ट एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर एंड दिस डॉट डी एक्स कमा डी वाई, राइट? सो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन फ्रॉम पहले क्या, जीरो टू ए। ओके, गॉड दिस इज जस्ट, ये तो बहुत बुरा होने वाला है इस टाइप से। वेट, अपने को सेम चीज का इंटीग्रेशन बस नेगेटिव में करना पड़ेगा, मतलब उल्टे लिमिट्स में करना पड़ेगा व्हेन यू विल गोइंग फ्रॉम बी टू सी, राइट? तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ऑल यू हैव टू एक्चुअली डू इज लाइक वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, so जो ऊपर वाला देने वाला है, राइट? सो ऊपर ऊपर वाला जो है दैट गिव्स दिस थिंग आई गेस, राइट? तो अच्छा नहीं, वाई स्क्वायर इज इन अलोंग द जे हैट इन फैक्ट, अच्छा वो भी कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया। Hey, okay, so it's like integration of x square dx plus y square dy, and it's going from, it's like some kind of loop integral जो भी है। ये जो चीज़ है इसका, of course, like, yeah, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, वो जीरो हो गया। That loop integral is zero, and ये loop integral भी जीरो हो जाएगा इनफैक्ट। So 18 का आंसर बी, बिना कैलकुलेशन किए मैं बोल सकता हूँ। Okay, 19th, 19th is, ये क्या है? अच्छा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन चलो, ठीक है 19 कर डालते हैं। यार ऐसे मूव मत करो। Small ball B of mass m is suspended with light inelastic string of length L from a block A of same mass, which can move on smooth horizontal surface as shown in the figure. What? Small ball B of mass m is suspended with a light inelastic string. ये string है, ये ball B है, from a block A of same mass, which can move on a smooth horizontal surface as shown. अच्छा, फिर रिलीज कर दिया। So ये टेंशन फोर्स इसका एक्ट कर रहा होगा, इस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। What do you want? This is a ball when the, okay, block when ball reaches the equal position. And it's a smooth surface, right? Smooth surface. तो इसमें सिर्फ, right, इसमें x कंपोनेंट में कोई फोर्स है नहीं, right? Yeah, equilibrium position. Ball reaches the equilibrium position. That's going to be, of course, this point, right? Yeah, sure. I guess. Wait, equilibrium position. What does that even mean? ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया ना, राइट? एट व्हाट थीटा विल यू हैव द इक्विलिब्रियम? आई गेस दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या राइट? सो ये वहां से भाग गया है, ऑफ कोर्स। वेट, बट द थिंग इज कि अच्छा ये वर्टिकल है, अब आई गेट दैट। ओह, इट्स नॉट हेल्पिंग मच। यू वांट दिस ऑफ, ओके दिस इज कॉम्प्लिकेटेड। ये एग्जैक्टली बॉल के एक्स पोजीशन पे आ चुका है, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, राइट? ओके, इन लोगों की एक्सप्रेशन सेम है। इट्स गोना बी ऑन सेंटर ऑफ मास। इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? एक्स कंपोनेंट ऑफ कोर्स। सो मास m है और ये क्या है? मास, सेम मास m, सो ये m/2 पे रहेगा। सो ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ये एग्जैक्टली ऐसा हो गया होगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो रहेगी दैट्स m/2, सॉरी ये जो पूरी लेंथ रहेगी दैट अपॉन 2, यानी कि L sin theta upon 2, of course. So 19 का आंसर E, 20. Okay. Maximum velocity of block during subsequent motion of the system after release of ball is, right. So maximum velocity, I guess that's when इसकी energy lowest है. At that point इसकी energy highest रहेगी, right? Yeah. Of course. At this point इसकी energy ऐसा हो रहा है। थिंक अबाउट इट। ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है इन दोनों पार्टिकल्स का, राइट? इसका वाई कंपोनेंट चेंज हो रहा है, आई गेट दैट, बट इसका एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता। दैट्स ओके, आई गेस दैट्स गुड।
फाइन, सो ये एंगल थीटा हो जाएगा एंड दिस कंप्लीट एंगल इज लाइक, क्या ये जो पूरी लेंथ है दैट्स एल, हाँ, सो ये एल कोसाइन थीटा हाइट है इसकी, राइट? सो एल टाइम्स 1 माइनस कोसाइन थीटा इज द h value. Okay, so mg of this guy, the potential energy हो गई इसकी, and then you also want the kinetic energy. Oh, and kinetic energy is gonna change actually. और अपने को इसका इक्वेशन पता भी नहीं है, हाउ डज द काइनेटिक एनर्जी चेंज? ये तो बहुत बुरा हो जाएगा इस टाइप से। नॉर्मल फोर्स लाइक दिस थिंग, अपने को इसका रिलेटिव वेलोसिटी वाला देखना पड़ेगा। वो ये बहुत बुरा हो रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट? या इसका मुझे पूरा एनालाइजेशन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। आई मीन या व्हाट एल्स, क्या करूं मैं, क्या करूं? हे वेट, अगर ये जो x वैल्यूज है वो सेम होनी चाहिए, इन दैट केस दिस मस्ट ऑलवेज बी L अपॉन 2। ओके, सो अपना जो सेंटर ऑफ मास है वी कैन फिगर आउट उसका क्या हो रहा होगा। या ओके, दैट्स नाइस। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बता सकते हैं एनी गिवन मोमेंट, राइट? सो इसके ऊपर ऐसे मूव हो रहा होगा, फाइन। उसके अलावा क्या, यू वांट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। क्या प्रॉपर फोर्स एनालिसिस करने के अलावा और कोई दूसरा तरीका है कि नहीं है? नहीं है, दैट्स द थिंग, राइट? लेट्स डू इट। सो इसका जो भी एक्सेलरेशन हो रहा होगा, राइट, जस्ट एक्चुअली राइट डाउन द इक्वेशंस। सो ये t है, दिस एंगल इज थीटा, सो यू गॉट t sin theta, pull it in that direction, so that's t sin theta, and you got tension in this direction, और क्या है अपने पास में, you got gravity, so mg like that, of course. So right, according to ये जो ये वाला जो ब्लॉक है उसके हिसाब से क्या हो रहा होगा कि ओके, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, t अपॉन m sin थीटा। तो फिर उसके हिसाब से एक्चुअल में ये सूडो फोर्स सफर कर रहा है t sin थीटा, या राइट? आई गेस दैट मेक्स सेंस। सो फिर यहाँ पे इसका 90 is थीटा, लाइक कोसाइन ऑफ दैट इज once you just t sin थीटा। इंटरेस्टिंग, ओके, आई सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके फाइन, सो yeah, right, it's like 2t sin theta in this direction, and ऊपर के डायरेक्शन में क्या है, just t cosine theta minus mg, about this point of course, right? Oh god, this is very weird, and this is equal to m omega square r, क्योंकि r dot तो 0 है, and this is equal to, अच्छा ये इक्वल वैसे नहीं कर सकते डायरेक्टली, वी हैव टू वर्क आउट की, या ओके, ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है इस टाइप से, अपने को ये कंपोनेंट्स देने पड़ेंगे इसलिए। ये कितना बुरा है यार, ये एंगल थीटा है, gotta make that component, and ये 90 थीटा रहेगा सर, and g sin theta plus t sin theta cosine theta, that's this thing, right? This is equal to mr alpha, okay, and इसके लिए क्या कर रहा हूँ, so t sin square, right? So t times of 1 plus sin square theta, that's this force, okay, minus mg, तो ये एंगल थीटा रहेगा कोसाइन थीटा ऑफ कोर्स, राइट, दैट्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। अब अपन t को इक्वेट कर सकते हैं, यू विल गेट एन इक्वेशन इन ओमेगा एंड अल्फा होपफुली। ओह गॉड, तुम्हें समझ रहा है मैंने ये करने का ट्राई क्यों नहीं किया, बिकॉज ये कितना घटिया सा है। दैट्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r प्लस g कोसाइन थीटा, और यहाँ से क्या हो रहा है, so t upon m times sin cosine is equal to r alpha minus g sin theta, divide कर दो, so just have 1 plus s square upon sc is equal to, या फिर इसको यार वैसे करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? so r alpha to, oh god, what is this seriously, I guess डिवीजन ही बेटर था। That's equal to r alpha minus g sin theta upon, omega square r plus g cosine theta, right? Which means r alpha is equal to g sin theta plus
ओमेगा स्क्वायर आर प्लस जी कोसाइन थीटा टाइम्स ये सारी गंदी सी चीज विच इज 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कोसाइन, और फिर तुम्हें अल्फा को लिखना पड़ेगा। यार ये कितना घटिया है, r omega d omega upon d theta, and then after doing all of this you will finally get relative velocities and everything. ये कुछ ही कुछ है, तुम्हें दिख रहा है राइट? या इसका पूरा एनालिसिस तो पूरा का पूरा पागलपन है। और हो गया फिर, यानी अगर मैं मेंस में ऐसे करने लग गया तो फिर ये क्वेश्चन तो मेंस में होएगा ही नहीं, अगर ये सॉल्वेबल ही नहीं है उस टाइप से, तो फिर तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन को ना सॉल्व कैसे करूँ कम लिमिटेड टाइम में? इसको लीव करना ही बेटर है ना, या कोई और तरीका है जिससे मैं इसको, ठीक है आई गेस वी शुड स्टॉप नाउ। मुझे इसमें कोई अच्छी चीज़ नहीं दिख रही जो कि मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ इसको, या आई डोंट सी एनीथिंग। फाइन, आई गेस आई विल स्टॉप। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।